Okay, good morning all. So previous class कौन start करतला हमें? First one symmetric matrix definition कौन कहला? A matrix or a square matrix A equal to Aij is called symmetric if first one कौन? A is equal to its transpose, that means the matrix equal to its transpose matrix, then the matrix is known as symmetric. Or second definition कौन? If Aij equal to Aji for all I and j, that means corresponding elements Aij equal to Aji, then the matrix is also known as symmetric matrix. So example लिख दिले symmetric रो simple 1 2 4, this one 2 5 6 3, so this is not 3, this one 4, and again 6, this one 7. So कौन कहले corresponding देखो symbol इधर में element same, इधर element same, and these two elements are same. आ कौन कहले हमें symmetric matrix. आ कौन कहले symmetric matrix. Okay. So similarly next one कौन देखो हम skew symmetric matrix. Second one कौन skew symmetric matrix. Same definition, a square matrix A equal to Aij of order anything order n by n is called skew symmetric. If and only first one A equal to minus of its transpose, next one, or Aij is equal to minus times Aji for all I and j. Aij equal to minus times Aji for all I and j. तो देख गोटे मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज तार माइनस सहित इक्वल होला और कौन लिख पे A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स A. गोटे मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज जदि तार माइनस सहित इक्वल होला देन ता कौन कहे हमें skew symmetric matrix. A transpose equal to A, then it is called symmetric matrix. A transpose equal to minus A, then it is skew symmetric matrix. Or simply कौन कह रहे Aij equal to Aji, then that is symmetric, and Aij equal to minus times Aji, then that is skew symmetric matrix. Okay, so second definition कौन लिखी जगह में और A matrix given अच्छी Aij, let it may be order n by n. Second definition कौन display Aij equal to minus times Aji for all I and j. I और j रो वैल्यू जहां हेले भी से कौन हो Aij equal to Aji हो. जदि मु कौन नहीं देखो if I equal to j, जदि हम कौन कले I equal to j नेले देन आकु मु कौन लिखि पारि
A I जे जगह सिंपली कहाँ रिप्लेस कर लिया I इक्वल टू माइनस टाइम्स A for all I that implies ये क्या माइनस से पड़ेगा कौन ला प्लस 2 टाइम्स A equal to 0 that implies A equal to 0 for all I A equal to 0 for all I that implies ये कौन possibility A11 equal to 0 A22 equal to 0 A33 equal to 0 up to ANN equal to 0 that means skew symmetric matrix रो diagonal element सबोले कौन होगा दरकार 0 होगा दरकार तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन रोची दैट डायगोनल entries or elements of a skew symmetric matrix are 0 A11 A22 A33 ANN कौन बोले diagonal element yes or not diagonal element skew symmetric matrix रो सबोले कौन होगा 0 हो skew symmetric matrix रो diagonal entry सबोले कौन होगा 0 हो Moreover, this one important point: the diagonal entries of a skew symmetric matrix are 0. Okay. Let's see an example. 0, 2, minus 2, 0. Is it skew symmetric or not? A गुटे matrix देची. यार transpose कौन हो जाएगा? A transpose is equal to again कौन होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रे लिखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम रे लिखिए एक माइनस टे कॉमन नियो माइनस टे कॉमन कोड जो सब जो एलिमेंट रो कॉमन जो तो दिस वन 0 दिस वन 2 दिस वन -2 अगेन 0 सो दिस वन माइनस है यस और नॉट तो फाइनली कौन मिलना हमारा A ट्रांसपोज is equal to minus A hence this is an skew symmetric matrix eta ki matrix skew symmetric matrix तो मेन पॉइंट कौन अछि एटी जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो डायगोनल एंट्री सब बोले कौन हो पले 0 हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो डायगोनल एंट्री ऑलवेज 0 डन नेक्स्ट सी क्वेश्चन for which value of lambda the matrix A equal to for which value of lambda this matrix A is skew symmetric for which value of lambda this matrix is skew symmetric anyone reply for which value of lambda this matrix is skew symmetric so skew symmetric रो प्रॉपर्टी कोन आछले सिंपली aij इक्वल टू कोन हो माइनस टाइम्स aj yes or not मते कार वैल्यू दरकार पे लैम्डा लैम्डा रो पोजीशन कोन है एलिमेंट लैम्डा होची a31 ना कोन प्ले मोर लैम्डा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम रो छी a31 होची कोन लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a13 a31 कोन अछि मोर लैम्डा which is equal to minus times a13 what is the value of a13 केता अछि a13 मोर अछि -5 so this one minus of -5 केता 5 so if lambda is 5 then the matrix A is a skew symmetric matrix
Okay, done. Is it symmetric or not? Is it symmetric or not? जो मैट्रिक्स देइछि एटा सिमेट्रिक ना नहीं? सिंपल देखो कि यार दुईटा एलिमेंट कोन अछि इक्वल अछि और लेट दिस may be a matrix, then its transpose also equal to this one, yes or not? So this is a symmetric matrix. यार ट्रांसपोज नले मते सेम मैट्रिक्स ए मिलछि, सो ये कोन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो इज इट स्क्यू सिमेट्रिक? Is it skew symmetric? Yes, sir. Yes, sir. Take its transpose. This one 0 0 0. Same. Yes or not? This is A. So A transpose equal to A. So it is symmetric. Yes or not? We can also write this one minus A. Minus times 0 is also equal to 0. So this is also skew symmetric. Yes or not? So the next important point is zero matrix is the only matrix. Zero matrix is the only matrix which is both symmetric and skew symmetric. Zero matrix is the only matrix which is symmetric and skew symmetric. Okay, wait. So what about this matrix? Is it symmetric or skew symmetric? Is it symmetric or skew symmetric? This one symmetric matrix. Let this one matrix A, then its transpose is also same. So this one symmetric because its transpose is also equal to that matrix. A transpose is equal to A here. So A is symmetric matrix. Then what about this matrix? Is it symmetric or skew symmetric? Or both? Symmetric. Is it symmetric, skew symmetric, or both? Symmetric. This is both symmetric and skew symmetric. Its transpose is again same matrix. We can write it also as minus times 0, which is also 0, which is equal to minus times A. Here A transpose equal to A and A transpose is also equal to minus A. So this one both symmetric and skew symmetric matrix. So this is all about symmetric and skew symmetric matrix. Okay. Then go for next important point. Some important facts about symmetric and skew symmetric matrix. Some important facts about symmetric and skew symmetric matrix. Okay. So first one, for any
square matrix or any square matrix A plus A transpose is symmetric. For any square matrix मुझे कौन सा गोटे square matrix नहीं चाहिए A be any square matrix then A plus A transpose, the matrix A plus A transpose is always symmetric. A plus A transpose is always symmetric. प्रूव करिए प्रेमले कौन कहूची मु जे कोन गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स नै छी लेट A be a square matrix 1 2 3 4 its transpose is 1 2 3 4 then find A plus A transpose this one 1 2 3 4 plus 1 3 2 4 this becomes 1 plus 1 2 2 plus 3 5 this one again 5 this one 8 look at here these two elements are same so it is a or take its just take its transpose A plus A transpose of A plus A transpose that means here transpose bar here transpose again कौन same 2 5 5 8 that means it is equal to A plus A transpose that means A plus A transpose matrix रो जदि मु transpose नेली मते same A plus A transpose मिलुची so this one कौन symmetric yes or not so हम देखिले कौन जनरली में जब मु जे कोन से स्क्वायर मैट्रिक्स नेली देन से मैट्रिक्स प्लस तार ट्रांसपोज नेले मते कंफर्म गुडे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलियो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A plus A transpose is symmetric so generally proof करियो ब्लैक let its proof given कौन अछि given that A be any square matrix A जे कोन जोड़े square matrix देछि so कोन करिया अछि we have to show that we show that the matrix A plus A transpose is symmetric मत कोन शो करिया अछि A ला जे कोन जोड़े square matrix देछि A plus A transpose is symmetric show करिया अछि so let it may be let A plus A transpose मु कोन नै लिखले B matrix नै छी A plus A transpose कोन नै लिखले मु B matrix so now B रो transpose कोन हो B रो transpose is simply A plus A transpose रो transpose yes or not हमें कोन प्रॉपर्टी पढ़थले बले ट्रांसपोज रो simply transpose रो प्रॉपर्टी कोन पढ़थले A plus B matrix रो transpose is equal to A transpose plus B transpose yes or not so देखो A plus A transpose रो transpose that means is simply equal to A transpose plus the transpose of A transpose yes or not next आउ कोन प्रॉपर्टी पढ़थले ट्रांसपोज रो A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज कोन हो A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज कोन हो A okay wait so this one simply A transpose plus A this one simply A transpose plus A transpose plus A को कोन लिखि पारे बोले matrix addition is commutative I know that matrix addition is commutative so this one simply A plus A transpose yes or not A transpose plus A is equal to A plus A transpose which is equal to B so finally we get that B ro transpose is equal to B transpose is equal to B this is nothing but definition of symmetric matrix so B is symmetric finally मत कोन मिलला ले B रो ट्रांसपोज का से इक्वल
B सहित equal, so B is symmetric. B कौन देछि, hence this matrix B, that means A plus A transpose is symmetric, hence A plus A transpose is symmetric. Okay, all of you got it? This one important point. Okay, similarly the next one, for any square matrix A, for any square matrix A minus A transpose is skew symmetric. फर्स्ट रे कोन देथिले जे A जे कोन सुटे स्क्वायर मैट्रिक्स देथिले, देन A plus A transpose कोन होतला सिमेट्रिक. सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट कोन लिखिछि, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A minus A transpose is skew symmetric. That means what is given here, given that A be any square matrix and we show that A minus A transpose this matrix is skew symmetric. आमे आपको skew symmetric शो करिया. एटा जे कोन जोटे स्क्वायर मैट्रिक्स देछि A minus A transpose को कोन शो करिया, skew symmetric. Let मु ताको B नै गेली, A minus A transpose is equal to B. Now what about B its transpose? B रो transpose केता हो, A minus A transpose रो transpose, yes or not? प्रॉपर्टी कोन पढथले हमें, A minus B रो transpose कोन हो, A transpose minus B transpose, and the transpose of A transpose is simply equal to केते कास्ते इक्वल A सहित, तो simply taking a common minus रे common ले कोन होला, A minus A transpose, yes or not? So finally ये केते लगने, एटा के मैट्रिक्स B, so this one minus B. So since B transpose is equal to minus B, so B is skew symmetric. Skew symmetric. B, that means B टा के ले A minus A transpose is skew symmetric. A minus A transpose is skew symmetric. So theta important in already कौन पढ़ले, जे if A is any square matrix, then A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. If A be any square matrix, then A plus A transpose is symmetric, A minus A transpose is skew symmetric. Similarly, go for the third one. If A is symmetric, if A is an symmetric matrix, then constant times A is also symmetric. If A is skew symmetric, next one skew symmetric, then constant times A is also skew symmetric. Next fourth one, कौन कहछि, if A is symmetric, जदि A symmetric है, then constant times A is also symmetric. If A is skew symmetric, then constant times A also skew symmetric. Simple देखिए पर example लेंगे, let A be 1 4 4 7. This is a symmetric matrix, yes or not? Theta equal है symmetric matrix. Then 2 times A कितना हो, 2 8 8 7. This is also symmetric. So A symmetric, constant times A also
symmetric. Similarly, if A is a skew symmetric matrix 0 0 2 minus 2, then 3 times A, this one simply 0 6 minus 6 0. Again this one and skew symmetric matrix. It has skew symmetric, ये भी skew symmetric. So धीरे धीरे प्रॉपर्टी देखिले, एग्जांपल देखिले, कौन देखिले, जो गोटे सिमेट्रिक मैट्रिक्स रे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कले से सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कले से भी स्क्यू सिमेट्रिक हो. तो जनरली प्रूफ कला के प्रूफ करे जनरल लिखले. सो गिवन कौन देछि, गिवन A is symmetric given देछि. A symmetric meaning कौन, A रो ट्रांसपोज A सहित इक्वल. This one given A transpose equal to A given this. So कौन करिया, we show that K times A is symmetric where K is a constant. K टा कौन देछि, constant. So now मते कागो सिमेट्रिक शो करी बले, आकु सिमेट्रिक शो करियार अछि, आरो ट्रांसपोज नै छ. यार ट्रांसपोज केता हो प्रॉपर्टी पढथिले, K into A रो ट्रांसपोज सिंपली इक्वल टू K टाइम्स A रो ट्रांसपोज. प्रॉपर्टी सब लास्ट क्लास रे कहि छी. बट A ट्रांसपोज कौन गिवन अछि बले मोर A, तो दिस वन सिंपली बिकम्स K टाइम्स A. दैट मींस मते कौन मिलला, K टाइम्स A रो ट्रांसपोज K टाइम्स A सहित इक्वल. हेंस K times A is symmetric. That means if A is symmetric, K times A is also symmetric. If K is skew symmetric, then K times A is also skew symmetric matrix. Okay. Last one, most important property. Look at it. 2A को बोले मु A plus A लिखियो, yes or not? 2A को A plus A लिखियो, लिखियो ना मेरे? We can also write it as A plus A transpose plus A minus A transpose, yes or not? देखो A transpose minus A transpose कट जो, that implies so A कौन देछि, A B any square matrix देछि, जे कोन जोडे स्क्वायर मैट्रिक्स देछि A टा कौन देछि, A B any square matrix. Then what about A टा को हम लिखियो बोले हाफ टाइम्स A plus A transpose plus 1/2 times A minus A transpose, yes or not? लिखियो ना, A equal to half times A plus A transpose plus half times A minus A transpose, yes or not? एबे टिके आकु कोन पढले बले, एटा की मैट्रिक्स for any square matrix A plus A transpose की मैट्रिक्स symmetric, हाफ ने मल्टीप्लाई कराई छी. सो कोन दिस वन सिमेट्रिक. जस्ट के आगुर कहले फर्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट A minus A transpose symmetric, constant times A minus A transpose skew symmetric, constant times skew symmetric is also skew symmetric, yes or not? So this one symmetric and skew symmetric. So the last property is any square matrix A can be written as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Skew
symmetric matrix. Any square matrix A can be written as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. That means ये कौन कोस बोले जे कोनस गुटे स्क्वायर मैट्रिक्स देछि ताकू मो गुटे सिमेट्रिक आउ स्क्यू सिमेट्रिक रो एडिशन रे लिखि पारे सिमेट्रिक आउ स्क्यू सिमेट्रिक रो एडिशन रे लिखि पारे प्रोसेस बुझिला नै गुटे गिवन देछि कोन स्क्वायर मैट्रिक्स रा को गुटे सिमेट्रिक आउ गुटे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो एडिशन रे लिखियो